ओके। आरबीआई बिहाइंड द कर्व नहीं, अहेड ऑफ कर्व रहता है, और उम्मीद इस पॉलिसी में भी है। आइए, डेट मार्केट पर किस तरह का एक्शन अब तक हुआ है पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद क्या कुछ हो सकता है? हमारे जाने माने पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीत साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में। फिरोज सर, बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से पॉलिसी में? मेरे हिसाब से पॉलिसी में अजय जी ने जैसे कहा, रेपो रेट डेफिनेटली। वो अजय जी है हमारे पास। ओके, बग्गा जी। बिल्कुल करेक्ट जी। हर चीज में वैरायटी है अनिल सर के पास। ऑफ कोर्स जी। सो एक तो रेपो रेट घटाने की अच्छी खासी संभावना है। ऑफ कोर्स द जीडीपी नंबर्स आर अ गुड प्रॉक्सी टू दैट। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि अब मैं डेरिवेटिव सेगमेंट काफी ट्रैक करता हूं, बिकॉज डेरिवेटिव ट्रेजरी संभालनी पड़ती है। जी जी। तो इसमें आप देखें, जो ऑप्शंस के जो स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस इज द वॉलेटिलिटी। जो दूर के ऑप्शंस जो होते हैं उसकी स्क्यूनेस इतनी ज्यादा मैंने नहीं देखी कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी में। 90 मॉनेटरी पॉलिसीज में मैं टर्मिनल पे बैठा हूं 2009 से 90 हुई हैं, उसमें से 50 में कुछ चेंज नहीं हुई। अच्छा। 22 में चेंज हुई ऊपर की तरफ, और 18 में रिड्यूस किया गया। ठीक है। ये है पूरे 90 पॉलिसियों की। इसमें से मतलब 40 में चेंज हुई? 40 में चेंज हुई, 50 में। हाँ। तो इस बार चेंज की उम्मीद बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज 24,000 का पुट नेक्स्ट थर्सडे का 38 रुपए का चल रहा है, जो 720 पॉइंट्स दूर है निफ्टी की। करेक्ट। 4 डेज है उसकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी अगर मैं कंप्यूट करूं, दिस इज द हाईएस्ट यू वुड सी फॉर अ 4 डे। और आप देखिए, ऑन द हायर साइड जनरली स्माइल कब होता है वॉलेटिलिटी में? 26,500 का, मतलब 25,500 का ऑप्शन आइडियली आज अगर नॉर्मल होता तो 4 रुपए का होना चाहिए था, 3 रुपए का होना चाहिए था। अब 18 रुपए का है एज वी स्पीक। सो इतनी ज्यादा स्क्यूनेस, मतलब वॉलेटिलिटी की आप उम्मीद करके चले। और ऑप्शंस मार्केट काफी अच्छी प्रेडिक्टर है। जैसे कल एक बहुत ड्रामेटिक डे था, इतना ड्रामेटिक डे था कि मैंने 10 साल में टर्मिनल पे बैठ के ऐसा कोई थर्सडे नहीं देखा कि स्ट्रैडल 300 रुपए का चल रहा हो 1:30 बजे, मतलब 1.25% का एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के दिन 1.5 घंटे की एवरेजेस चालू होने वाली है। इतना ज्यादा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, और मार्केट ने वो वॉलेटिलिटी दिखाई भी और 500 पॉइंट की स्विंग दी। डेरिवेटिव मार्केट एक कंसोलिडेटेड ओपिनियन है भारत देश का। हम जब सर्वे करते हैं तो एक 20 लोगों की सर्वे कर सकते हैं, बट डेरिवेटिव मार्केट इज अ कंसोलिडेटेड बैरोमीटर ऑफ व्हाट इंडिया इज थिंकिंग एंड ऑल पार्टिसिपेट्स आर थिंकिंग। तो मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी की उम्मीद करके चलनी चाहिए। शार्प मूव्स होंगे। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, इंड्यूस वॉलेटिलिटी एक बड़ा, अनिल सर आपके शायद ये आए, काफी सारे एल्गोस क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक निफ्टी ही एक डिराइव्ड इंस्ट्रूमेंट है, वो वॉलेटिलिटी को इन्फ्यूज कर रहे हैं। टॉप 4 स्टॉक में बहुत ज्यादा खरीदी या बेची कर रहे हैं इन मिली सेकेंड्स, उसकी वजह से स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं। और मैं तो एज अ डेरिवेटिव स्ट्रेटेजिस्ट, वो स्टॉप लॉस दूसरों की ट्रिगर होगी उसके लिए मार्जिन लेके बैठने लग गए लोग, दूसरे लोग, राइट। एंड कल 5 मिनट के लिए, so a point I'm trying to make is volatility is going to be high, repo rate has to be reduced, ये उम्मीद है मार्केट की। और तीसरी, डेट मार्केट में लॉन्ग एंड ऑफ द यील्ड कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्प्रेड है रेपो रेट और 10 ईयर जीसेक का सिर्फ 27% का है, और लास्ट 15 साल की एवरेज है 1.7% की स्प्रेड। भले ही रेपो रेट घट जाए, 10 ईयर जीसेक नहीं घटेगा। डेट फंडों में पैसे नहीं बनने वाले, क्योंकि नुकसान नहीं हुआ है जब ऊपर गए थे। मॉर्निंग एंड नमस्कार। Every 2 months I have been presenting the monetary policy statement on behalf of the Monetary Policy Committee and the Reserve Bank of India before you. In fact, a detailed, elaborate statement presenting before all of you is a practice which we started during the period of the COVID, when there were lockdowns and restrictions. We considered that this was the most appropriate way of communicating with every stakeholder in the economy. Monetary policy is important because it affects the life of people. It affects each and every segment of the economy, howsoever small or big. It affects the vegetable vendors. It affects the big corporates. It affects the middle class. I think it also affects the farmers, the industry, the business. So it has wide-ranging impact on the economy, and that is why I'm sure that is the reason why most of you are listening to the governor's statement. Our effort is to follow the flexible inflation targeting framework as provided in the Reserve Bank of India Act.
The Act provides that the Reserve Bank, that is the Monetary Policy Committee, to price stability. In fact, it is a mandate. The mandate given to the Reserve Bank of India is to maintain price stability while supporting or keeping in mind the objective of growth. Price stability is important for the people because it affects their purchasing power. It is important for stability of businesses. It is important for exporters and importers. It is important for every segment of the economy. So price stability is important. At the same time, growth is also very important. As an economy, India has been growing in the last 3 years at more than 8%. Growth, that is the GDP growth, the growth of the gross domestic product, is also very important. And as provided in the law, it is always our effort at the Reserve Bank of India, it is also the effort of the Monetary Policy Committee to follow the provision of the law as embedded, as provided for in the Reserve Bank of India in letter and spirit. So with these opening remarks, I present before you the monetary policy statement of today. And this is how it goes. As we stand at the threshold of 2025, let me reflect upon the eventful journey of 2024. In line with the trend in the last few years, central banks were once again put to the ultimate test to stabilize their economies against continuous, colossal, and complex shocks. Central banks are constantly adapting to the new global economic and financial landscape created by geopolitical conflicts, geoeconomic fragmentation, financial market volatility, and continuing uncertainties, all of which are testing the resilience of the global economy. The last mile of disinflation is turning out to be prolonged and arduous, both for the advanced economies as the emerging market economies, that is the EMEs. Maintaining macroeconomic and financial stability and building buffers continue to be the lodestar, especially for the emerging market economies. In India, notwithstanding the recent aberration in growth and inflation trajectories, the economy continues its journey on a sustained and balanced path towards progress. Amidst the reshaping of the global economy, India is well positioned to benefit from the emerging trends as it forges ahead on a transformative journey. Let me now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee, which met on 4th, 5th, and today 6th December. After detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, because monetary policy is forward-looking, so we have to always look at the outlook. The Monetary Policy Committee decided by a majority of 4:2 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided unanimously to continue with the neutral stance and to remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. I shall now briefly set out the rationale for this. The MPC took note of the recent slowdown in the growth momentum, which translates into a downward revision in the growth forecast for the current year. Going forward into the second half of this year and the next year, the MPC assessed the growth outlook to be resilient, but warranting close monitoring. Inflation, on the other hand, surged above the upper tolerance band of 6% in October, driven by a sharp uptick in food inflation. Food inflation pressures are likely to linger in Q3 of the current financial year and start easing only from
the Q4 of the current financial year, that is from January to March, driven by a sharp uptick in food inflation. Food inflation pressures are likely to linger in Q3 of the current financial year and start easing only from the Q4 of the current financial year, that is from January to March. And we expect that this is the trend, and it will be backed by seasonal correction in vegetables prices, Kharif harvest arrivals, likely good Rabi output, and adequate cereal buffer stocks. High inflation reduces the disposable income in the hands of consumers and dents private consumption, which negatively impacts the real GDP growth. The increasing incidence of adverse weather events, heightened geopolitical uncertainties, and financial market volatility pose upside risks to inflation. The MPC believes that only with durable price stability can strong foundations be secured for high growth. The MPC remains committed to restoring the inflation growth balance. I repeat, the MPC remains committed to restoring the inflation growth balance in the overall interest of the economy. Accordingly, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting, and also to continue with the neutral stance of monetary policy, as it provides